Good morning, teacher. I'm Engineer Martin Plaza. What is a microprocessor? Microprocessors are everywhere providing intelligence in car, mobile phones, home and office equipment, televisions and entertainment systems, medical products, airplanes, the list is endless. A microcontroller is an integrated circuit that contains a central process unit, CPU, memory unit, RAM and ROM, input and output ports and peripherals. It can be 8 or 16 bytes. These parts are interconnected within the microcontroller and together they form what is known as a microcomputer. It can be said with all propriety that a microcontroller is a complete microcomputer encapsulated in an integrated circuit. A microcontroller is not a microprocessor. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। दोस्तों ज़्यादातर डाउट देखा है मैंने माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में होता क्या है, ये सारा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के बीच में। तो आज इसी टॉपिक पे मैं लेके आया हूँ वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में डिफरेंस। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर को देखें, माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का बोल सकते हैं कि सीपीयू है। इट इज अ सीपीयू जो कि जिससे कनेक्टेड क्या है, मेमोरी और आईओ पोर्ट है। इसका बेसिक एग्जांपल आप बोल सकते हैं दोस्तों
क्योंकि आपके घर के कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू से क्या कनेक्ट होती है अपनी मेमोरी और आईओ पोर्ट्स। इसमें एक कंडीशन ये है कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है दोस्तों, हम अपनी मेमोरी और आईओ पोर्ट्स की संख्याएं हैं उनको बढ़ाया घटा सकते हैं। वहीं हम बात करें दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर की, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक सिंगल चिप है जिसमें क्या होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, आईओ पोर्ट होते हैं। तो ये इसका अंतर कैसे रहा माइक्रो प्रोसेसर से? जी हाँ दोस्तों, अंतर इसका ऐसे रहा कि एक चिप के अंदर सीपीयू, मेमोरी और आईओ पोर्ट एम्बेडेड होते हैं फिक्स अमाउंट में, जिसकी तो बोल सकते हैं मेमोरी की साइज उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते। वहीं आईओ पोर्ट जो है वो भी फिक्स रहते हैं, उसको भी बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये है माइक्रो कंट्रोलर। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहला है साइज। माइक्रो प्रोसेसर का साइज बढ़कर हो सकता है क्योंकि हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम अपनी रैम बढ़ा सकते हैं, हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हैं, मतलब साइज बढ़ा सकते हैं उसमें। वहीं माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो वो कॉम्पैक्ट होता है, मैंने जैसे बताया था, जिससे अमाउंट ऑफ मेमोरी वो साइज रहता है उसमें। हम कॉस्ट की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर एक्सपेंसिव है क्योंकि हम उसमें एडिशनल चीज़ें जोड़ रहे हैं इसलिए। और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, चीप है। चीप इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारा एक फिक्स अमाउंट ऑफ इसमें सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। पावर कंजप्शन की बात करें तो 220 वोल्ट एसी लेता है अपना कौन, माइक्रो प्रोसेसर। वहीं 5 वोल्ट डीसी कौन लेता है, माइक्रो कंट्रोलर। और पोर्टेबल की बात करें तो नॉट पोर्टेबल है कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, पोर्टेबल है। वहीं हम बात करें स्टोरेज कैपेसिटी की, तो स्टोरेज कैपेसिटी किसकी अच्छी है, माइक्रो प्रोसेसर की। डिपेंड करता है ये यूज़र पे कौन सा उसको यूज़ करना है, मगर स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो कंट्रोलर की क्या है, फिक्स रहेगी। जितनी मेमोरी इसमें आई है, आईओ पोर्ट्स आए हैं, उतनी ही रहेगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। Every microcomputer requires a program to perform a specific function. This is normally stored in the ROM memory. It should be noted that the evolution of microcontrollers are PLCs. Quick! A programmable logic controller, or PLC, is simply a special computer that is programmed to control certain processes in industries like petroleum, steel, or automotive. Every PLC is composed of 3 main parts: input, CPU, and output. Suppose that we have an electrical motor and a push button. We want the motor to turn on when the button is pressed. When the button is pressed again, we want the motor to turn off. This function is similar to the function of the power button on your TV remote. To do this, we must first write a program for this operation on a computer and then download it to the CPU. Then, we connect the switch to the input and the motor to the output. Now, if we press the button, an electrical signal will be sent to the PLC. The PLC input will deliver this signal to the CPU, but first must present it in a format that the CPU can process. Why? Because the CPU is a computer system and cannot process the raw electrical signal. The CPU will process the data received and send the result to the output. The output turns the data to a raw electrical signal again and applies that to the motor and turns it on. Now, if we press the button again, the process repeats and the motor will turn off. Okay, if you like this video, subscribe to stay updated with our new videos. Mbed Integrated. One of these microcontrollers is the Mbed, launched by ARM. The Mbed takes the form of PCB of 2 by 1 inch, with 40 pins arranged in 2 rows of 20, with a space of 0.1 inch between legs. This spacing is a standard in many electronic This microcontroller includes a reset switch to force the restart of the current program. The Mbed is built to allow easy prototyping, which is of
occurs its purpose, while the PCB itself has a very high density. The interconnection is achieved through the very robust and traditional double-pin design inline. Background information for Mbed and its support tools can be found on the Mbed homepage. The current design of Mbed hardware is the way in which this device manages the USB link and acts as a USB terminal on the host computer. In the most common use, it receives program code files by USB and transfers those programs to a 16 MB memory, which acts as USB disk. Thank you so much.